Hello everyone, welcome to SPS Solutions. So let's come to the next topic of today. So let's start with the video. Now we have to discuss this redox reaction. So basically before discussing this redox reaction ki definition, I will be telling you some very basic things. Like if I say redox reaction is made up of two words, RAD and OX. RAD stands for reduction and OX stands for oxidation. Okay. Now I will be giving you a definition of both, meaning of both. Like if you see, जैसे आप डिफाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट यू टेक वन थिंग एंड डिफाइन अकॉर्डिंगली. चाहे आप ऑक्सीजन की टर्म्स में डिफाइन करो, चाहे आप हाइड्रोजन की टर्म्स में डिफाइन करो. सो आई एम टेकिंग ऑक्सीजन टर्म्स. सो ऑक्सीडेशन में द वर्ड इज डिफाइनिंग इटसेल्फ ऑक्सीजन की एडिशन. सो ऑक्सीडेशन इज addition of oxygen is called as oxidation reaction. Means वो reaction जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और नया सब्सटेंस बन रहा है. सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. तो जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन की टर्म्स में ही हम रिडक्शन को डिफाइन करेंगे, तो इसका जस्ट रिवर्स रिडक्शन हो जाएगा. दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called as reduction reaction. So basically these are the two words which are having one definition, that is removal of oxygen and addition of oxygen. Okay, now if I want to define it in terms of hydrogen, मैं दोनों terms में लिख देती हूँ to avoid any kind of confusion कि बुक में किसी बुक में हाइड्रोजन की टर्म्स में लिखा है, किसी बुक में ऑक्सीजन की टर्म्स में लिखा है. So I am giving both the things. If I have to define this in terms of hydrogen, तो सिंपल सी चीज है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में हम इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली रिमूव हो रहा होगा. सो आई विल बी राइटिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दिस इज एडिशन ऑफ hydrogen is called as oxidation reaction. Okay, so either you define in terms of oxygen or you define in terms of hydrogen. Both the definitions are correct, nothing is wrong. You can take any one of the two, but one thing is आप जिस टर्म में एक डेफिनेशन लिखोगे उसी टर्म्स में आप दूसरी भी लिखेंगे to avoid any kind of confusion while writing the answers. So after this I will be coming back to the definition of redox reaction. So what is redox reaction? So redox reaction is that reaction in which, see, when process of oxidation and reduction takes place simultaneously, it is called as redox reaction. Means वो reaction जिसमें oxidation और reduction process बिल्कुल साथ के साथ हो रहा है, उन reactions को हम बोलेंगे redox reaction. ठीक है. So this is all about definition of redox reaction. Now come to the example of redox reaction. We will be taking one or two examples of redox reaction where something is getting oxidized, something is getting reduced, and in that reaction we will be discussing that it is considered as redox reaction due to these and these reasons. So let's come to the example. So first example if I am writing for redox reaction is that copper oxide, when it is allowed to react with the hydrogen H2, then it will be forming copper plus H2O. So in this reaction, see, it is considered as a redox reaction and it is a redox reaction. जहाँ पे if you see
कॉपर ऑक्साइड से अगर हम कॉपर की साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग इट्स वन ऑक्सीजन, ओके, एंड गोइंग टू कॉपर. इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड इज दैट एलिमेंट जिसका यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है वहां से. ठीक है. एंड इफ आई सी द केस ऑफ हाइड्रोजन, while going from reactant side to product side, in case of hydrogen, oxygen is getting added. Okay, so basically हाइड्रोजन का क्या हुआ है हमारा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है. सो हेयर इन दिस कंप्लीट रिएक्शन, बोथ द रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ redox reaction. Okay, another example if I see is iron oxide, that is Fe2O3. When it is allowed to react with aluminium, I am balancing also, side by side मैं balance भी करती चल रही हूँ. It will form aluminium oxide along with the formation of iron. So simply it is very much visible to you that in case of iron oxide, if you see, the process of reduction is taking place here. Half reduction हुआ है. And in case of aluminium, means if you see from reactant side towards product side, यहाँ पे oxidation हुआ है. So this is also can be taken as an example of redox reaction. So simply by seeing this example, these examples, we can easily answer that which part has undergone oxidation and which part has undergone reduction process. Okay, so this is all about oxidation and reduction. So students, this is all about in this video. Thanks for watching SPS Solutions.